Good morning, Creamy. Once again, a very good morning to all my dear students. Here we go with our disclaimer. It is hereby declared that the production of the said content is meant for non-commercial, scholastic and research purposes only. We admit that some of the content or the images provided in this channel's video may be obtained through the routine Google image searches, and few of them may be under copyright protection. Such usage is completely inadvertent. It is quite possible that we overlook to give full scholarly credit to the copyright owners. We believe that the non-commercial, only for educational use of the material, may allow the video in question fall under fair use of such content. However, we honor the copyright holders' rights and the video shall be deleted from our channel in case of any such claim received by us or reported to us. Please be online.
Okay, now, so let's begin and let's move forward with the syllabus. Before we move forward, question: how many primary clearing banks are there? The things that we have discussed in our last session. How many primary clearing are approved by NSCCL? Yes, can you hear me? Yeah, so please tell me total how many clearing banks are there that has been approved by the NSCCL actually. Okay, Sneha has rightly answered. It's 13. Very good. Two banks that I have focused more. That one is HSBC and the another bank was the first one is HSBC. This was yes, very good. ध्रुवी एंड आप दोनों चॉकलेट खा लेना मेरी तरफ से वेरी गुड थैंक यू ओके सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड procedure for change in primary clearing bank. For example, your account is your account is there with Standard Chartered Bank or HSBC or SBI, Axis, HDFC or any other bank. Reason you want to change it, then you have to follow the protocols. ऐसे ही नहीं होगा कि भाई चलो मुझे आज ये मेरा बैंक का अकाउंट यहाँ पे क्लोज कर देना एंड विल होगा कि आज मुझे यहाँ पे स्टैंडर्ड चार्ट में मेरा अकाउंट क्लोज करना है एंड विल मूव टू द नेक्स्ट बैंक नो इट्स नॉट लाइक दैट यू हैव टू फॉलो सर्टेन प्रोटोकॉल्स उसका जो compliance will and on the basis of that your primary bank will give you NOC आपका कुछ भी डेबिट क्रेडिट जो भी है जो भी है once you complete all the compliances then and then only your primary clearing bank will give you NOC that is no objection certificate account no issue आप अकाउंट अपना चेंज कर सकते हो स्टैंडर्ड चार्टर्ड में से आपको HSBC में जाना है यू कैन गो it's perfectly fine but the thing is that but you have to okay please be online let me check please be online
Is it visible now, class? Am I clearly audible, visible, and the slides are there on your screen? Yeah, okay, thank you. So let's start with the first one. Procedure for change in primary clearing banks. If you want to change your bank, you can change it. There is no issue. But for that, you have to take NOC from your existing clearing bank. आपको HSBC में से स्टैंडर्ड चार्टर्ड में शिफ्ट होना, यू कैन शिफ्ट, नो इश्यूज फॉर दैट, बट you have to follow each and every compliances that has been governed by the NSCCL for the clearing members. And once you complete all the procedures, then and then only the clearing banks, primary clearing bank will give you NOC, that is no objection certificate, so that with the help of that no objection certificate, you can open your new primary bank account with another bank. Now suppose आपने अपना अकाउंट जो है वो क्लोज करना है, शिफ्ट करना है, उसकी रिक्वेस्ट वहां पे दे दिए, बट फर्स्ट प्राइमरी बैंक जो है, प्राइमरी क्लियरिंग बैंक जो है, वो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, देन व्हाट यू शुड डू, यू शुड वेट फॉर 15 डेज, फोर्टनाइटली आप बोल सकते हो, 15 डेज तक आपको वेट करना है, एंड देन उसके बाद भी अगर आपको एनओसी वहां से नहीं मिलता है तो आप एक सेल्फ डिक्लेरेशन या तो एक एक्नॉलेजमेंट जो है वो आप अपने आप सबमिट कर सकते हो कि भाई हमने ऑलरेडी पिछली एग्जिस्टिंग जो बैंक थी वहां पे हमने ये एनओसी के लिए अप्लाई कर दिया है, एंड इट्स ऑलरेडी 15 डेज, बट टिल डेट वी हैवंट रिसीव एनी response from their side, and we assure you that we don't have any debit or credit accounts, or you can say like that we have settled all our debts, like this. You have to give assurity, you have to give declaration for this, then and then only the new clearing bank will allow you. So let's go with the procedure for change in primary clearing banks. In case a clearing member wishes to shift the primary clearing bank account from one designated clearing bank to the another one, the following procedure they are bound to follow. The first one is the clearing members have to request the primary clearing bank in writing for issuing no objection certificate for shifting of the primary clearing bank account. They have to give in रिटर्न में देना पड़ेगा कि भाई आप मुझे एनओसी दीजिए बिकॉज आई वांट टू शिफ्ट माय अकाउंट फ्रॉम एचएसबीसी टू स्टैंडर्ड चार्टर्ड और टू एसबीआई और टू एनी अदर बैंक, एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू डिस्क्लोज कि मुझे ये बैंक में शिफ्ट होना, इट इज नॉट नेसेसरी. द क्लियरिंग मेंबर हैज टू रिक्वेस्ट एनएससीसीएल, एनएससीसीएल को भी आपको बताना पड़ेगा, द क्लियरिंग मेंबर हैज टू रिक्वेस्ट NSCCL in writing seeking its permission for shifting of the primary clearing bank account, giving details of outgoing and new bank. NSCCL में आपको सब बताना पड़ेगा, why you want to shift, existing बैंक कौन सी है, नई कौन सी बैंक में आप शिफ्ट होने वाले हो, आपके सभी ट्रेड्स, उसका सेटलमेंट्स, अकाउंट्स की सभी डिटेल्स, कौन कौन से सेगमेंट में आप थे, अब आपको कौन कौन से सेगमेंट में जाना है, इफेक्टिव डेट कौन सी रहेगी, कौन सी डेट से आप वहां से यहाँ शिफ्ट होना चाहते हो, एंड उसके साथ ही आपको एनओसी भी वहां पे सबमिट करना पड़ेगा और वो एनओसी आपकी एग्जिस्टिंग बैंक देगी. सो वेयर द एनओसी नॉट रिसीव्ड, जहां पे अगर एनओसी नहीं मिला है तो वहां पे आप 15 डेज तक वेट कर सकते हो, एंड उसके बाद आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो वहां पे देना पड़ेगा. वेयर द एनओसी इज नॉट रिसीव्ड, द मेंबर शैल फर्निश एन एक्नॉलेज्ड कॉपी ऑफ द एनओसी रिक्वेस्ट अलोंग विद डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट that no response has been received from the existing primary clearing bank in respect of the NOC request, even after a minimum waiting period of a fortnight. 15 days तक आप वेट कर सकते हो. Later on, if you not receive any response, you can submit the same to the NSCCL, and plus you have to add your declaration, or you can say the acknowledgement for the same.
So NSCCL thereon issue a letter of introduction to the other designated clearing bank. For example, your existing clearing bank is not ready to give you NOC because of certain reasons, and you follow the further procedure, the remaining procedure, then NSCCL will give you a letter of introduction, and with that letter only the new clearing bank will open your account. Otherwise it won't be possible to open new account. On opening the primary clearing bank account with the other designated clearing bank, the clearing member have to submit to NSCCL the documents relating to the new primary clearing bank account issued by the clearing bank and the copy of authority letter in favor of the clearing bank. अब ये authority letter कौन सा होगा, जो मैंने आपको इनिशियली बताया था कि सभी क्लियरिंग मेंबर्स को एक authority letter जो है वो साइन करके देना पड़ेगा, जहां पे क्लियरिंग बैंक्स जो है ऑन बिहाफ ऑफ क्लियरिंग मेंबर्स उसके अकाउंट में से कोई भी अमाउंट क्रेडिट कर सकती है, कोई भी अमाउंट डेबिट कर सकती है, बट डिपेंड्स टू द ट्रेड्स दैट टुक प्लेस ऑन एनएससी और बीएससी और एनी अदर करेंसी डेरिवेटिव एक्सचेंज। कहीं पे भी जिसका ये क्लियरिंग मेंबर जिस सेगमेंट में वर्क कर रहा होगा उसके रिलेटेड जो बैंक होगी उसमें जितने भी ट्रेड्स होते हैं उन सभी ट्रेड्स को सेटल करने का, उसके अकाउंट में से रुपीस डेबिट क्रेडिट करने का राइट्स जो है वो आप प्राइमरी क्लियरिंग बैंक को दे रहे हो। ऐसा अथॉरिटी लेटर जो है वो क्लियरिंग मेंबर को बैंक में सबमिट करना पड़ेगा। ये हमने ऑलरेडी बात कर ली थी एक बार। Now NSCCL thereon communicates the date from which the new primary clearing bank account is operational। कौन सी डेट से? with effect from। आप लोगों ने कई बार ऐसा देखा होगा WEF ऐसा लिखा होगा, WEF, आई एम क्लैरिफाइंग। सो WEF आप लोगों ने कई बार देखा होगा, इट मींस with effect from। इस इफेक्ट से आपका ये नया अकाउंट जो है वो ऑपरेशनल हो जाएगा। आप उसका डे टू डे अपने जो भी ट्रेड्स है उसमें आप यूटिलाइज कर सकते हो। NSCCL thereon communicates the date from which the new primary clearing bank accounts is operational. The clearing members are required to intimate NSCCL whether they wish to continue the existing primary clearing bank account as the additional clearing bank account or discontinue the same। आपका पुराना जो HSBC में अकाउंट था वो आपको वहां पे रखना है या यू वांट टू क्लोज इट, वॉटर क्लियरिंग मेंबर्स को जो भी करना है वो उसको राइटिंग में। सी यहाँ पे एवरी कम्युनिकेशन दैट टुक प्लेस विल बी इन रिटन फॉर्म, आइदर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और ऑन रिटन फॉर्म, बट यस इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड फॉर दैट पर्पज ओनली। सो क्लियरिंग मेंबर्स को बताना पड़ेगा, क्लियरिंग मेंबर्स को NSCCL को इंटीमेट करना पड़ेगा whether they want to continue with their existing or you can say the old primary clearing bank account, and in addition to that whether they want to discontinue the same, they have to inform in writing to the NSCCL। after the change in primary clearing bank ये उसको पूरा प्रोसेस जो है वो फॉलो करना है। In the event of the clearing members wishes to discontinue the existing primary clearing bank account, NSCCL communicates the date after which the existing primary clearing bank account may be closed by the clearing members। Certain time limitations यहाँ पे है जो उसको फॉलो करनी है। एक तो ये होगी, मैं आपको एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ भी मैं बताऊंगा, जब तक आपके सभी ट्रेड्स एग्जिस्टिंग ट्रेड्स है या तो ऑनगोइंग ट्रेड्स है या तो कोई भी है, ऑक्शन वाले कुछ ट्रेड्स है, शॉर्टेज वाले कुछ ट्रेड्स है, उन सभी का पे इन एंड पे आउट जब तक सेटल ना हो जाए तब तक आप अपना पुराना अकाउंट क्लोज नहीं कर सकते हो। इवन दो यू आर क्लियरिंग मेंबर्स, you don't have right to close your existing primary clearing bank account till or until your every trades get settled with special reference to pay in and pay out। क्योंकि यहाँ पे रुपीस का मैटर है तो वो काफी मैटर करेगा, बट ऑब्वियस है। एंड वंस NSCCL get confirmation from the bank side that yes we do have every trade settled,
जितने भी ट्रेड्स थे वो सब ट्रेड्स हमने सेटल कर दिए, ऑप्शन था जो भी था, ईच एंड एवरीथिंग इज क्वाइट क्लियर नाउ. And once NSCCL get this confirmation from the previous primary clearing bank, then and then only NSCCL will give the dates. From this date, your previous account will be closed like this. So this is the entire process that clearing members are bound to follow. In the event of the clearing members wishing to continue the existing primary clearing bank account as the additional clearing bank account, the clearing member is required to provide the letter from clearing bank confirming continuance of account as additional clearing bank account. अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपका सेविंग अकाउंट 10 बैंक में है, मेरा सेविंग अकाउंट 2-3 बैंक में है, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट बीइंग क्लियरिंग मेंबर्स, it is quite rational that you keep only one primary clearing bank account for the better trade execution. But फिर भी चलो ऐसा है कि भाई एग्जिस्टिंग मेरा जो है वो HSBC में था, बट नाउ आई वांट टू मूव ऑन टू द स्टैंडर्ड चार्टर्ड. तो एक बार मेरा स्टैंडर्ड चार्टर्ड में अकाउंट मेरा ओपन हो गया, वहां पे सभी ट्रेड्स मेरे एग्जीक्यूट होने लगे, वहां पे सब सेटलमेंट्स होने लगा, NSCCL से भी बात हो गई, वहां से इंट्रोडक्शन का लेटर आ गया, सब चीजें एग्जिस्टिंग जो पुराने बैंक थी वो भी रेडी है, उसने भी एनओसी दे दिया, एंड एवरीथिंग वाज क्वाइट क्लियर. बट देन ऑल्सो मेरा जो पुराना अकाउंट है, अगर मुझे वो कंटिन्यू करना है एज एडिशनल वन, वहां पे भले ही मेरे कोई ट्रेड्स ना हो, बट मुझे वो एज इट इज भी कंटिन्यू करना हो, तो मुझे NSCCL को ये बताना पड़ेगा. एंड जो मेरा एग्जिस्टिंग HSBC में अकाउंट था, वहां पे भी मुझे वो इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई मेरा ये अकाउंट है, भले रहा हो, मतलब वॉट एवर द लीगल लैंग्वेज इज देयर, दे कैन यूज द सेम. सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस फॉर चेंजिंग द बैंक अकाउंट्स, clearing primary bank account actually. So procedure for change in primary clearing banks. So any doubts for the same class? Yeah, thank you. So now the next point is सिक्योरिटीज पूल अकाउंट. जिस तरीके से ये क्लियरिंग बैंक से उसके पास अथॉरिटी रहती है कि क्लियरिंग मेंबर्स के अकाउंट में जो भी प्लस माइनस करना है दे कैन डू इट. इट इज रिलेटेड टू द अमाउंट. नाउ हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सिक्योरिटीज in terms of shares, in terms of capital markets, in terms of like debt market or securities of lending and borrowing schemes and something like that. So यहाँ पे एक pool account की हम बात करेंगे. We have already had word about that and उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया था. So the paragraph is quite small. Securities pool account. Settlement of security obligation is carried out through both the leading depositories NSDL and CDS. दो है सबसे बड़े हमारे डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स है, NSDL and CDS. मेजोरिटी जो है डिपेंड्स ऑन रीजन वाइज. जैसे कि अगर हम बात करें हमारे यहाँ पे है तो NSDL काफी चलता है, महाराष्ट्र है तो वहाँ पे CDSL काफी चलता है. बट डिपेंड्स ऑन क्लियरिंग मेंबर. क्लियरिंग मेंबर्स का अच्छा एसोसिएशन किसके साथ है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा. सो सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज ऑब्लिगेशंस इज कैरिड आउट थ्रू बोथ द लीडिंग डिपोजिटरीज NSDL एंड CDSS, member in capital market, debt segment and SLBS, securities lending and borrowing schemes, are required to mandatorily open their securities pool account with both NSDL and CDSL. The member, those who are working in capital market, in debt market and in SLBS, it is mandatory for them to open their securities pool account with NSDL and CDSL both.
आपका दोनों में अकाउंट होना चाहिए। बट जनरली जैसे कि अगर हम बात करें एंजल है, तो एंजल जो है वो CDSL का यूज करता है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, तो वो उसका यूज करता है। उसके जितने भी ट्रेड्स होते हैं, जितनी भी सिक्योरिटीज का बाइंग एंड सेलिंग होता है, वो वहां पे सेट ऑफ होता है CDSL में। दूसरा एक है जैसे कि इंडिया बुल्स है, या फिर अगर हम बात करें 5paisa.com, या फिर zerodha.com, या फिर MSFL है, या फिर कोई भी अजर नेट वाला ले लो, मोतीलाल ओसवाल ले लो। तो अलग अलग कंपनी जो है, अलग अलग क्लियरिंग मेंबर्स जो है, वो अपने हिसाब से ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का यूज करते हैं। बट दोनों में आपका पूल अकाउंट होना जरूरी है, क्योंकि इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप इसी में ट्रेड करो। अब तो ऑनलाइन ट्रेडिंग हो गया, तो मैं अपने हिसाब से कहीं पे भी ट्रेड कर सकता हूँ। सो दैट्स व्हाई इट इज कंपल्सरी to open the securities pool account in both the segments, or you can say in both the depository participants. Clearing member have to approach any of the depository participants of both NSDL and CDSL to open the securities pool account. किसी एक में भी ओपन कर सकते हो, बट दोनों में आपका अकाउंट होना चाहिए। एंड कंपनीज आर वाइज, दे आर कीपिंग बोथ द अकाउंट्स in active form. The securities pool account with NSDL can be used for capital market, securities lending and borrowing, and debt segment. But CDSL जो है वो सिर्फ यूटिलाइज हो सकता है कैपिटल मार्केट एंड डेट सेगमेंट के लिए। वहां पे SLBS स्कीम जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। CDSL में सिर्फ आप कैपिटल मार्केट एंड डेब्ट सेगमेंट में ट्रेड कर सकते हो, जबकि NSDL में आप कैपिटल मार्केट, डेब्ट मार्केट, और यू कैन से सेगमेंट एंड SLB स्कीम में भी आप ट्रेड्स कर सकते हो। फॉर SLBS मेंबर्स हैव टू ओपन सेपरेट सिक्योरिटीज पूल अकाउंट विद CDSL। अगर NSDL में है तो तीनों वहां पे आ जाएंगे, CDSL में है तो एट प्राइमरी आपके पास दो रहेंगे, कैपिटल मार्केट एंड डेट सेगमेंट। अब उसमें आपको SLBS करना है तो एक्स्ट्रा आपको वहां पे एक अकाउंट जो है वो ओपन करवाना पड़ेगा। इन केस क्लियरिंग मेंबर्स विशेस टू शिफ्ट the CDSL or NSDL securities pool account from one depository participant to another, then the details of new account have to be intimated to NSCCL in the prescribed format. If the same is not updated with the NSCL, the instruction generated by NSCCL for payout shall be generated with old details. यहाँ पे भी अगर किसी क्लियरिंग मेंबर्स को CDSL में से NSDL में जाना है, या तो NSDL में से CDSL में आना है, they can do it, but same time they have to update, they have to give intimation to the NSCCL. जब ये इंटीमेशन NSCCL को मिल जाएगा तो अगेन वहां पे विथ इफेक्टिव फ्रॉम डेट जो भी रहती है वो बताई जाएगी दोनों डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स को, एंड फ्रॉम दैट डे और फ्रॉम दैट डेट ऑनवर्ड्स आपके जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, सिक्योरिटीज का जो सेटलमेंट्स होता है, वो आपके नए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ होगा। बट आपको NSCCL को बताना पड़ेगा, एंड इफ यू फेल टू डू सो तो आपका जो पुराना सेगमेंट था, मतलब पुराना जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स था, आपके ट्रेड्स वहीं पे एग्जीक्यूट हो गए एंड आपकी सिक्योरिटीज वहीं पे ट्रेड होगी। सो दिस इज व्हाट बेसिकली वी कैन से अबाउट द पूल अकाउंट्स। नाउ सिस्टम एंड इंटरफेसिस। आप लोगों ने नाम सुना है ओडिन? मैं किसी मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, थोर का बेटा, ओडिन का बेटा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग, ओडिन। नाउ ये आपने नाम सुना है इसका कहीं पे? लाइक इफ यू गाइज आर एक्टिव इन स्टॉक मार्केट, या तो आपके फादर से, फोर फादर से कहीं पे आपने सुना हो। ओके, एक्चुअली ये दोनों सॉफ्टवेयर्स है, अभी भी है। अगर हम बात करें पुरानी, लाइक 2010 या फिर उसके आसपास के 2015, और इवन यू कैन से 2016-17 लाइक दैट। अभी रिसेंट जो है मोबाइल में ट्रेड्स काफ़ी बढ़ गए। पहले ऐसा नहीं था, पहले लैपटॉप के थ्रू ही ट्रेड्स होते थे, अभी भी हो रहे हैं। बट ये दोनों सॉफ्टवेयर, जो ओडिन जो है वो सॉफ्टवेयर है,
जिसकी हेल्प से आप स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया सॉफ्टवेयर है, उसमें डिटेल एनालिसिस भी आता है एंड मोस्टली जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं वो उसका इस्तेमाल करते हैं। नाउअडेज ऑल्सो ओडिन, बट कस्टमर्स जो है वो कंपनी के प्रोवाइड किए गए हुए सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ब्रोकर्स जो होते हैं वो ओडिन का या तो नाव, एनएससी का नाव, एनएसई नाव, ये उसका पूरा नाम था। एनएससी ने ही ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया था, NOW, एनएससी नाउ। आप इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स चाहते हैं तो यूट्यूब पे या फिर समाव नेट के ऊपर ही अवेलेबल होगा। ओडिन जो था वो चार्जेबल था, उसका पर मंथ डिपेंड्स, ब्रोकर्स के लिए कुछ 3000 रेंट था एंड जो क्लाइंट्स थे उसके लिए कुछ 500 रुपीज़ जितना रेंट जो है वो उसका होता था। नाउ जो है वो पूरा फ्री था, कंप्लीटली फ्री फॉर ब्रोकर्स एज वेल एज टू द क्लाइंट्स, दोनों के लिए वो फ्री था। तो ओडिन जो है आई विल पर्सनली रिकमेंड, क्योंकि मैंने यूज़ किया है तो एकदम बढ़िया है। बट नाउ डेज कई सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर जो है वो मार्केट में आ गए, बट ये दोनों सॉफ्टवेयर जो है वो हाईली ऑथेंटिकेटेड थे एंड अभी भी कई सारे ब्रोकर्स जो उसका इस्तेमाल करते हैं। सो नाउ विल मूव टू द सिस्टम्स एंड इंटरफेसेस। तो इससे पहले मैंने सोचा ये आप लोगों को बता दूं systems and interfaces and how it works. NSCCL provides following systems and interfaces to custodian, means clearing members, for the purpose of clearing and settlement. Now the first one is NSCCL Clearing Management Services, NCMS. अब यहाँ पे क्लियरिंग मैनेजमेंट सर्विसेज तो है, बट सबसे इम्पोर्टेंट होगी रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, RMS, जो आपका सॉफ्टवेयर होता है वो कितना शार्पली आपके ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए अलाउ करता है, वो काफ़ी मैटर करता है। सो यहाँ पे NSCCL क्लियरिंग मैनेजमेंट सर्विसेज विल प्रोवाइड NCMS, F&O, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, currency derivatives and debt segments. Interface provided to clearing members to approve or reject trades of custodial participants clearing through it. They can approve your trades, they can reject your trades too. वो आपके ट्रेड्स रिजेक्ट भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपके अकाउंट में 50,000 रुपीज़ है एंड उसके ऊपर आपको लिमिट मिलती है 10 टाइम्स, मीन्स 5 लाख का स्टॉक आप परचेज कर सकते हो। नाउ आपने ऑर्डर वहाँ पे एंटर किया 5.5 लाख का, तो वो ऑटो रिजेक्ट हो जाएगा। सेटअप ऑटो अप्रूवल लिमिट फॉर कस्टोडियल पार्टिसिपेंट्स, एक ऑटो अप्रूवल आपकी एक लिमिट होगी कि भाई इतने लिमिट में ही वो बंदा अपना ट्रेड्स जो है वो कर सकता है, तो उसको ऑटो अप्रूवल दिया जाएगा कि फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में जितना फंड है, दिस इज फॉर क्लियरिंग मेंबर्स टू, आपके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए है तो अकॉर्डिंगली यू कैन ट्रेड अप टू 100 करोड़ रुपीज एंड समथिंग लाइक दैट। देन सेटअप कोलेट्रल लिमिट फॉर ट्रेडिंग मेंबर्स, कोलेट्रल की लिमिट भी यहाँ पे सेट की जाएगी। कोलेट्रल लिमिट मीन्स आप जो भी शेयर्स अपने प्लेज करते हो वहाँ पे हेयर कट होता है। हेयर कट क्या है मालूम है आप लोगों को? हेयर कट ये आप और मैं जो रेगुलर हेयर कट करवाते हैं उसकी बात नहीं है यहाँ पे। यस क्विकली, चलो वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। ओके, हेयर कट क्या है? आपके पास फॉर एग्जांपल 100 रिलायंस शेयर्स है जिसका मार्केट रेट अभी फॉर एग्जांपल 2,000 रुपये चल रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 लाख रुपीज होगी। अब आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने ट्रेडिंग करने के लिए, तो आप क्या करते हो, आप वो 100 रिलायंस शेयर्स जो है उसको प्लेज कर देते हो, कोलेट्रल में दे देते हो बतौर गारंटी। तो अब उसकी मार्केट वैल्यू 2 लाख रुपए है, तो जो भी एक्सचेंज है वो उसको 2 लाख का पूरा ट्रेड एग्जीक्यूट करने नहीं देंगे, वहां पे वो हेयर कट लगाएंगे। डिपेंड्स ऑन द सिक्योरिटी दैट यू हैव गिवन फॉर द कोलेट्रल। रिलायंस है तो उसमें 10% का हेयर कट लगेगा, दूसरी कोई स्क्रिप्ट है तो उसमें 15% का हेयर कट लगेगा,
जैसे कि यहाँ पे रिलायंस के एग्जांपल के साथ ही कंटिन्यू करते हैं, आपने 2 लाख रुपीस की सिक्योरिटी जो है कोलेटरल में रख दी है, वहां पे प्लेज कर दी है, तो वहां पे आपको 1,80,000 रुपीस का मार्जिन जो है वो मिलेगा, 10% का हेयर कट वहां पे रहेगा। अब आप बोलोगे कि सर वो आज अभी 2000 का रेट है रिलायंस का, कल 1800 हो गया तो अगेन आपका मार्जिन जो है वो 1,80,000 जो आपको पहले दिया गया था 10% हेयर कट करने के बाद, तो वो अगेन वहां पे उसमें कटौती आ जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू योर शेयर प्राइस, with respect to the market valuation of your company's shares। इस हिसाब से पूरी सिस्टम जो है वो वर्क करती है। तो वहां पे ट्रेडिंग मेंबर्स के लिए भी एक लिमिट सेट की जाती है, एंड उसके लिए हेयर कट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, एंड हेयर कट डिपेंड्स ऑन द सिक्योरिटी, मे वरी फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप, फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। Clearing members have to send mail for activation of service to connect to nac@nac.co.in giving details of member code। जो भी member का कोड होता है अलग अलग होता है, सभी members का अलग अलग कोड होता है। Upon activation they have to ensure that static IP 192.168.1.25 and depends, जहां जहां पे static ID जो है वो यूटिलाइज होता होगा उस हिसाब से। अपॉन एक्टिवेशन, एक बार आपने बता दिया, एनएससी को मेल कर दिया एक्टिवेशन करने के लिए, कोई मेरा ये ट्रेडर है, मेरा क्लियरिंग मेंबर है, आप उसको एक्टिव कर दो, उसके बाद आपको एक स्टैटिक आईपी दिया जाएगा। अपॉन एक्टिवेशन दे हैव टू एंश्योर दैट स्टैटिक आईपीज ऑफ मशीन्स from where they intend to access the facility using connect to NSC utilities as explained below in C2 and utilities। NCFM capital market segment interface provided to member in capital market for modification of client। Yes, मार्जिन वाला रिपीट कर सकते हैं सर? आई डिडंट गेट इट। just give me 1 minute, then I'll repeat it। Let me complete this first one। NCMS जो है उसमें कैपिटल मार्केट सेगमेंट में आपको क्या दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा मॉडिफिकेशन ऑफ क्लाइंट एंड कस्टोडियल पार्टिसिपेंट्स कोड्स। आपको आपके क्लाइंट्स या फिर जो भी आपका सीपी है उसके कोड्स आपको चेंज करने, जैसे कि अगर हम बात करें एंजल की तो एंजल का कोड रहता है MJM, उसके बाद रहता है। अगर हम बात करें JM फाइनेंशियल की तो उसमें रहता है 3591, डिपेंड्स। अगर हम बात करें रत्नाकर सिक्योरिटीज की तो उसमें भी अलग रहता है। तो अलग अलग कंपनीज का अलग अलग कोड रहता है, दैट दे कैन डिसाइड बाय देयर ओन। देन अलोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल ट्रेड्स टू इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स, ये सब राइट्स जो है वो उसको वहां पे मिल जाएंगे। Will stretch it up to extranet। Let me complete this too। Members has to send the request letter as per prescribed format for activation of NCMS capital market facility। NCMS IPO offer for sale capital market segment interface provided to custodial clearing members of capital market segment to confirm or reject custodial participants order in offer for sale। They can reject, they can confirm, they do have rights। The interface is available to members of of capital market segment of to view the status of confirmation of such trades using the interface। आप जो भी ट्रेड्स करते हो once they get executed तो वहां पे आपको मैसेज आ जाएगा, एक बार कंफर्म हो जाएगा, आपको क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद एग्जीक्यूट होता है तो आपको उसका मैसेज आ जाएगा। नाउ हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है NCMS, ये क्लियरिंग मेंबर्स के लिए है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक मतलब काफ़ी पुराना है एक्चुअली, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 है, CPU 2 गीगाहर्ट्ज का है, रैम 4 GB है, तो ये मतलब मिनिमम बोला है यहाँ पे, बट वो काफ़ी कम है। ऑल्सो इट इज़ रिकमेंडेड टू रन इंडिविजुअल EXEs फाइल फॉर वेरियस सेगमेंट्स ऑन सेपरेट मशीन्स। आपका NSE का है, BSE का है, कैपिटल मार्केट का है, डिपेंड्स, तो वहाँ पे उस हिसाब से आपको वो चेंज करना पड़ेगा, वो exe.files जो है वो रन करनी पड़ेगी। If any additional software processes are running on the same machine
then resources need to be increased accordingly. अगर वहाँ पे ज़्यादा सॉफ्टवेयर चल रहे हैं तो रैम आपको 8 GB का करना पड़ेगा, सीपीयू आपका उसका जो गीगाहर्ट्ज़ है वो बढ़ाना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको विंडोज 10 लेना पड़ेगा, एंड डिपेंड्स लाइक दैट. So this is all about the C2 and utilities, or you can say the systems and management services, NSCCL clearing management services. Okay, yes, now tell me, yes. मार्जिन में ऐसा है बेटा कि आपके पास पैसे नहीं है पर आपके अकाउंट में शेयर्स पड़े, तो विदाउट मनी तो आपको कोई ट्रेडिंग करने के लिए अलाउ नहीं करेगा. तो आप क्या करोगे, आप आपके पास जो शेयर्स है वो आप वहाँ पे प्लेज करते हो, कोलेट्रल में दे देते हो. अब आपके जो शेयर्स है आज उसकी मार्केट वैल्यूएशन 2 लाख रुपए है, तो वहाँ पे 10% का हेयर कट लगा के वो लोग आपको 1,80,000 तक के ट्रेड करने के लिए आपको अलाउ करेंगे. तो आपने 1,80,000 का ट्रेड किया. अब नेक्स्ट डे फॉर एग्जांपल जो रिलायंस के शेयर्स थे आपके पास, उसका प्राइस 200 था, 2000 था, अब उसमें प्राइस कम हो गई और उसकी प्राइस हो गई 1,800 रुपीज़. 10% का उसमें डिडक्शन आ गया. पहले 2,000 था तो आपको 2 लाख के हिसाब से 1,80,000 की लिमिट मिली थी. अब वो शेयर की प्राइस जो है 1,800 हो गई, तो टोटल वैल्यूएशन 1,80,000 हो गई. तो 1,80,000 में से अगेन 10% डिडक्ट करने के बाद आपको 1,62,000 की लिमिट जो है वो दी जाएगी. ऑन बेसिस ऑफ दैट यू कैन ट्रेड. अब उसमें अगर मार्जिन कम होता जाता है तो दैट यू हैव टू पे इन एक्स्ट्रा. Okay, yeah, so we'll keep up to this only. That's it for the day. Thank you so much, class. Stay home, stay safe, take care. Thank you. You please write your enrollment number in chat box, as we are very less in number, so definitely I can easily recognize, but then also you may write it. सर, एक्सक्यूज मी सर.